Chale, so today we are going to start the most important topic of Excel, which is pivot table. And this is very important topic. अभी तक Excel में जितने भी topics है, this is the most important topic of Excel. से start करेंगे. We are going to start from the scratch itself. Just hold on. I'm going to share the screen. And this is very important topic. मतलब आप ये समझ लो कि ये सबसे ज्यादा काम आने वाला है आपका ऑफिस में. Plus this is means the one of the common topic for the interview. Chaliye, so I'm going to start this one. So pivot table is majorly used for summary. Data को summary create कर सकते हैं. This is the first thing that we can use for the pivot table. Second, analyze. Third, explore. Data को और अच्छे से देख सकते हैं. Fourth, segregate या split बोल सकते हैं split. Fifth, consolidate. Sixth, dashboard. Seventh, custom calculations. So there are a variety of use of this pivot table, and we are going to see all these features because इसको theory में अगर cover करेंगे तो समझ में नहीं आएगा. We'll start from the practical itself, and the most common things that we use while using this pivot table is the summarize part. सबसे ज़्यादा जो हम लोग use करते हैं वो summary create करते हैं from a big data. Let's suppose we have a big data and we have n number of columns, n number of rows. Now using that data, if I wanted to summarize it, मुझे थोड़ा सा briefly देखना है, जैसे employee wise count, designation wise performance, department wise maximum sale, something this type of आपके जो भी summary type of data that we can use with this pivot table, and this is one of the most common options that people are using while creating a pivot table. Now let us understand the structure of this summary data. एक summary data का structure कैसा होता है? Suppose we have an employee data where we have employee ID, name, designation, department, date of joining, and apart from this, we have this scores, location, everything related to that data. Now, the task is to get department-wise count. मुझे department-wise count चाहिए. So, department-wise count कैसे आएगा? Simply what we do, अगर मुझे count निकालना है, I am not saying that we are going to use pivot table. मैं pivot table use किए बिना या करके भी, the structure would be same. कैसे करते? मान लीजिए these are the departments और उनके बगल में हमें count देना होता है. यही तो होता है, हम जो देते हैं यही count होता है कि these are the department, this is the count. So this is known as summary data. Now next summary data क्या हो सकता है कि this is the department and this is male and this is female. इनके काउंट चाहिए. ओ सॉरी, ये कर देता हूं मैं उधर. Now this is the count. So एक summary report ये भी होता है. This is the first one where we are using few rows or rows के against में data. Now in this summary report we are going to use some rows, we are going to use some 2 columns, and we are getting the calculations. Now third could be that I wanted to see the department wise or designation wise male female count, but only for those who are from south region. So I have set a condition for that. So there are n number of scenarios while we are creating a summary report. So the basic structure is something like this. It would be a rectangle type of thing, जहां पर these are known as rows. These are known as columns. And this is always a calculation. Sum, average, max, mean, count, counted, anything. So this is, you can say, values, calculations. And the last one, this one. ये मान लीजिए filter जिसको बोलते हैं. Any condition that we set is known as filter.
दिस इज क्लियर, दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर फॉर एनी समरी डेटा। अब मुझे क्या करना है, इसी रूल को फॉलो करना है व्हाइल क्रिएटिंग ए पिवट टेबल। ध्यान दीजिएगा, पिवट टेबल में भी ये 4 ऑप्शंस आपके पास आएगा ना। यू हैव टू डिसाइड दैट मुझे किस तरह से डेटा को दिखाना है, राइट। अब आप बताओ, इस डेटा जो है ये मेल फीमेल इज द पार्ट ऑफ दिस कॉलम, दिस डिपार्टमेंट्स आर द पार्ट ऑफ दिस रोज। अगर मुझे कंडीशन सेट करना है साउथ, सो दिस इज द पार्ट ऑफ फिल्टर एंड दीज आर द कैलकुलेशंस व्हिच इज द पार्ट ऑफ दिस। यही 4 चीज। सो लेट अस स्टार्ट विद ए फाइल। एक फाइल से स्टार्ट करते हैं। लेट अस क्रिएट सम रिपोर्ट्स यूजिंग पिवट टेबल। एक बार देखते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। नाउ दिस इज माय अगेन द सेम टाइप ऑफ डेटा जो हम यूज करते हैं। These are the names, gender, department, designation, zone, region, date of joining and marks. So ये data है. Now we wanted to create some summary report. Let us see. I wanted to create designation wise, sorry, department wise count कि एक department में कितने कितने लोग हैं. So how to create a pivot table? The simple thing is that we'll just place our cursor here. कहीं पर भी आप रख सकते हो इन द डेटा, ऐसे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, जस्ट प्लेस योर कर्सर। नाउ फ्रॉम द इंसर्ट टैब आई गो विद दिस पिवट टेबल। तो यहाँ पर काफी सारे चीज आ रहे हैं। सिंपल सा मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जाऊंगा, क्लिक ऑन दिस पिवट टेबल। नाउ इट्स आस्किंग, इट्स ओपनिंग वन विंडो। ये पूछ रहा है कौन सा डेटा, तो ये ऑलरेडी दिस डेटा इज सिलेक्टेड। आपको एक बार कंफर्म करना है, नहीं तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। न्यू वर्कशीट, यस, मुझे नए वर्कशीट में चाहिए बिकॉज बाय डिफॉल्ट द रिपोर्ट वुड बी क्रिएटेड इन अ न्यू वर्कशीट। अगर आपको एग्जिस्टिंग में करना तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कहाँ डेटा को चाहिए। फर्स्ट आई हैव टू गो विद दिस न्यू वर्कशीट। तो यहाँ पर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग। आई जस्ट व्हाट आई हैव डन, आई एम गोइंग टू जस्ट सिलेक्ट दिस पिवट टेबल, नथिंग टू बी चेंज्ड हियर, क्लिक ऑन ओके। नाउ व्हाइल वी क्लिक ऑन ओके, इट्स क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, न्यू शीट। एक नया शीट ऐड हो गया। दिस इज द डेटा शीट, शीट 1 इज एडेड। नाउ वी आर गेटिंग द लिस्ट ऑफ ऑल द हेडिंग्स। इस डेटा में जितने भी हेडिंग्स थे, आई एम गेटिंग द लिस्ट ऑफ ऑल द हेडिंग्स व्हिच इज आईडी, नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, जोन, रीजन, डेट ऑफ जॉइनिंग एंड मार्क्स। एंड दीज आर द 4 सेक्शंस जो अभी हमने यहां देखा था, रोज, कॉलम्स, वैल्यूज एंड फिल्टर। दिस इज शोइंग फिल्टर, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज। नाउ अब आप एक चीज बताओ, डेजिग्नेशन वाइज काउंट चाहिए, डेजिग्नेशन वाइज काउंट। सो इफ आई एम गोइंग टू फॉलो दिस रूल, सो डेजिग्नेशन कहाँ आना चाहिए, रोज में या कॉलम्स में? वेयर सर? रोज में। रोज में आना चाहिए, बिल्कुल। और कोई भी कैलकुलेशन होगा वो ये इसी एरिया में आना चाहिए। एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन, उसके लिए सोचना ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ रोज और कॉलम्स में आपको डिसाइड करना है। बाकी इफ एनी कंडीशन इज टू बी सेट देन फिल्टर, एंड इफ एनी कैलकुलेशन देन वैल्यूज। तो सिंपल सा है, इफ आई वांटेड टू get this designation into rows, तो sorry department, तो department को मैं drag करूंगा। I'll drag it into rows like this, drag करूंगा। So rows में क्या, so I'm getting all the departments here। देख रहे हो आप, सारे departments आ गए हैं। Now if I wanted to have any calculations, तो ये values वाला field है। So मैं department को, let us say I am going to drag this department into this values, so I am getting this one, which is these are the departments and these are the data. Total records is 785, out of this department wise आपके count आ गया। This is clear? Now अगर मैं डिपार्टमेंट को ड्रैग करूंगा कॉलम्स में, सी ओनली द लुक एंड फील इज गोइंग टू बी चेंज्ड। सो ये कॉलम्स में सारे डिपार्टमेंट्स आ गया एंड द काउंट इज देयर। सो इट इज नॉट मैंडेटरी कि मैं इसको कहाँ ड्रैग करूंगा। दिस इज नॉट मैंडेटरी। This is important that how you wanted to see the data. Data को आपको देखना कैसे, that is important. Now if I wanted to get the same report gender wise, तो मैं gender को कहाँ रखूंगा? Let us make this gender into columns. Columns में ड्रैग करता हूँ, तो आप देखिए आ गया ना, मेल, फीमेल और ये है। अब अगर देखिए जेंडर को अगर मैं रोज में ही रखता हूँ, रोज में if I wanted 2 things, first is department, second is gender, so I am getting this data. First is department, second is gender. First is department, second is gender. अगर मैं gender को ऊपर कर देता हूँ, let's say department के ऊपर, तो first is gender, then उसके अंडर में जितने departments हैं,
सेकेंड जेंडर उनके अंडर में जितने डिपार्टमेंट. So this is important that how you wanted to see the data. I can drag anything anywhere. Now if I wanted to see the entire data for south zone, so I have to set a condition under filter. तो मैं zone को रखूंगा filter में. Now this is showing all, so I'll be selecting this south. Even you can select multiple like this. तो मैं अभी single करता हूँ which is south. Click OK. So this one. This is clear. यहां तक समझ में आ गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए पिवट टेबल. अब क्वेश्चन ये है कि इफ द डेटा इज बीइंग चेंज्ड इनटू दैट मेन डेटा, लेट्स से एनालिटिक्स फीमेल इज 13, एनालिटिक्स में फीमेल 13 लोग हैं. सो आई एम गोइंग टू दिस वन. मैं किसी एक फीमेल के आगे एनालिटिक्स कर देता हूं. तो अब क्या होना चाहिए? 14 होना चाहिए ऑब्वियसली, राइट? नाउ लेट अस सी. आई जस्ट रिफ्रेश द डेटा. इसके अंदर में रख के रिफ्रेश, और यू कैन गो टू डेटा टैब एंड दिस इज आस्किंग फॉर रिफ्रेश. जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा सो इट्स शोइंग 14, एनालिटिक्स 14 हो गया. सो ऑटोमेटिकली दिस विल change the entire data whenever we are going to right click and refresh, or we can just go to data tab and यहाँ पर refresh को use कर सकते हैं. That's it. Now next one, if I wanted to see that this is showing 12, मेल का ह्यूमन रिसोर्सेज का 12 दिखा रहा है. लेट अस डू वन मोर थिंग. ईस्ट का कर लेता हूं. ईस्ट में बिजनेस डेवलपमेंट में मेल है 9. ईस्ट business development male is 9. So whenever I'm going to double click on this 9, so I'll be getting one separate sheet. So this is showing the data, which is male, business development, and the zone is east. So इनका पूरा data आ गया. So at any point of time, if I'm going to double click on any of the calculation, it will show the source data. एक नए sheet पे source data आपको दिख जाएगा. Clear? चलिए. सो अभी हमने पिवट टेबल का एक बेसिक फंक्शनैलिटी देखा, जो पिवट टेबल क्रिएट करना, पिवट टेबल रिफ्रेश करना, पिवट टेबल को बेसिकली डेटा वहां से लाना, एंड दिस 4 कंपोनेंट्स दैट हाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस 4 कंपोनेंट्स. नाउ लेट अस रिमूव एवरीथिंग. मैं यहां से अनचेक करके रिमूव कर सकता हूं. नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस, लेट्स से डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट वाइज काउंट. Now this is showing grand total. I wanted to remove grand total. बताइए कैसे करेंगे? ग्रैंड टोटल को कैसे हटाते हैं? इस 15th रो को अगर मैं डिलीट कर देता हूं तो ग्रैंड टोटल हट जाएगा. कैसे हटाएंगे 15th रो को? हाउ वी कैन रिमूव दिस 15th रो? Right click and delete row. Right. So right click and delete. और ये delete नहीं हो रहा है. Sir, we cannot change the total sum because that is by default in a pivot. By default in a pivot table. तो अब देखिए this is showing grand total. अब grand total के कुछ लोग हाइड कर देते हैं ऐसे. राइट. कैसे हाइड करते हैं? राइट क्लिक करते हैं, दिस इज बीइंग. नाउ बट व्हाट यू कैन डू, यू कैन रिमूव दिस ग्रैंड टोटल. क्या करना पड़ेगा? राइट क्लिक करना पड़ेगा ग्रैंड टोटल के ऊपर, दिस सेल. सो वी हैव टू राइट क्लिक ऑन दिस सेल एंड दिस इज शोइंग रिमूव ग्रैंड टोटल. डन. नाउ हाउ कैन वी ब्रिंग दैट ग्रैंड टोटल? तो राइट क्लिक करके क्या करेंगे? आई जस्ट क्लिक ऑन शो ग्रैंड टोटल. क्या करेंगे? राइट क्लिक करके व्हाट वी आर गोइंग टू डू? शो ग्रैंड टोटल. यस. और वो है ही नहीं ऑप्शन. The option is not there. So what we have to do? So whenever we are going to create a pivot table, we are getting 2 tabs, analyze and design. जैसे बाहर रखूंगा तो ये दोनों टैब नहीं दिखेंगे. Whenever we are going to put my cursor on this pivot table, so I am getting this analyze and design. Now, analyze tab is basically for data analysis in using pivot tables. We are going to cover each and every point. And the design is used for look and feel. Look and feel को ठीक रखने के लिए. Now here we are getting this grand total where we can on, we can off, we can on, we can off. तो यहाँ से manage कर सकते हैं, right? This one.
Sometimes what we do, we close this one. This is known as pivot table fields. क्लोज कर दिया और कल के दिन फिर से चाहिए तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन आइदर गो टू राइट क्लिक एंड शो फील्ड लिस्ट, और वी कैन गो टू एनालाइज एंड वी कैन गो विद दिस फील्ड लिस्ट देयर, तो ये फिर से आ जाएगा, राइट। नाउ सो दिस इज शोइंग ग्रैंड टोटल, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू हाइड द ग्रैंड टोटल, तो वो हमने कर लिया। नाउ द नेक्स्ट इज I just wanted to show this as a percentage. This is showing 785 records. So out of 785, I just wanted to show this in a percentage. Percentage में मुझे देखना है कैसे करते होंगे, बताइए। How you are doing like अभी? So how to show this in a percentage? Whenever I am going to right click on this one, any of the figure. So I am getting two options for pivot table: summarize value and show value. Summarize value is showing sum, count, average. Show value is seeing that how I wanted to show this value, जो value आपके पास आया है, so I wanted to show in percentage of grand total. Now this is showing percentage of grand total, which is this one. So these are the different departments and these are percentage wise count. Percentage, right? क्लियर है? अगर मैं यहां पर चले आता हूं, सो वैल्यू एज नो कैलकुलेशन, सो इट विल शो नो कैलकुलेशन, सिंपल सही है, नॉर्मल एज इट इज दिखाएगा। बट इफ आई वांटेड टू शो दिस इन ए परसेंटेज, सो आई एम गोइंग विद दिस वन, शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। क्लियर एवरीबॉडी? दिस इज क्लियर? नाउ इफ आई एम गोइंग टू दिस वन, आई कैन गो विद नो कैलकुलेशन। लेट अस सी इफ आई एम गोइंग टू मार्क दिस वैल्यूज और डिस्ट्रीब्यूट दिस वैल्यूज एज जेंडर स्पेसिफिक, मैंने कर दिया मेल फीमेल। नाउ व्हाट आई वांटेड टू डू, आई वांटेड टू चेक फॉर एवरी डिपार्टमेंट में जो टोटल आ रहे हैं उनका कितना परसेंटेज मेल है और कितना परसेंटेज फीमेल है। जैसे 91 के कितने परसेंटेज फीमेल है और कितने परसेंटेज मेल है, 21 के कितने परसेंटेज फीमेल है, कितने परसेंटेज मेल है। आई जस्ट वांटेड टू शो द डेटा लाइक दिस। सो राइट क्लिक, so value as, sorry, summarize value as percentage of row total का percentage like this। ये देखिए ये percentage आ गया। now it's not required, इसकी requirement नहीं है, तो right click, I can remove this grand total। so this is showing out of 100%, this is showing ratio for female and male जो आपके हैं, right। so right click, यहाँ पर लेके आता हूं मैं, राइट क्लिक, सो वैल्यू एज नो कैलकुलेशन, ऐसे कर सकते हैं, यू कैन डू लाइक दिस। चलिए, सो दिस आर द डिफरेंट कैलकुलेशंस दैट यू कैन डू। अब मैं जाता हूं, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। नाउ इन दिस डेटा वी हैव a date column which is date of joining, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है यहाँ पर। नाउ विद दिस डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमें क्या करना है, जस्ट वांटेड टू क्रिएट मंथली रिपोर्ट, मुझे मंथली रिपोर्ट क्रिएट करना है, वेयर वी वांटेड टू शो द डेटा लाइक दिस कि जनवरी में इतने लोग आए हैं, फरवरी में दिस मेनी पीपल, मार्च, अप्रैल, सो मंथ बाय मंथ वी वांटेड टू शो द ज्वाइनिंग काउंट। कैसे होंगे, हाउ यू आर डूइंग दिस? अभी अगर आपके पास ये रिक्वायरमेंट आ गई तो आप कैसे करोगे? नाउ इफ आई एम गोइंग टू यूज पिवट टेबल, so what we can do, let us see, एक बार देखते क्या ऑप्शंस हैं। so we are going to this sheet, we can go for this date of joining in the rows, now date of joining in the columns, or sorry values। now this is showing January, ये पूरा पूरा डेट आ रहा है। what we can do, right click, we can go with this group, now it's asking for grouping, यहाँ पर मैं बोल दूंगा मंथ्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इफ इट्स नॉट सिलेक्टेड यू कैन सिलेक्ट, क्लिक ओके, डन। सो दिस इज शोइंग मंथ बाय मंथ रिपोर्ट, ये आ रहा है मंथली रिपोर्ट, देखा जनवरी में इतने, फरवरी में इतने, लाइक दिस, राइट। सो व्हाट आई हैव डन, मैंने डेट को ड्रैग किया, राइट क्लिक, ग्रुप मंथ्स, डन।
Now if I wanted to show both months and years भी दिखाना है और month भी दिखाना है. Let us see. Group. So months to selected, I can select the years also. Now this is showing years and month. 2011, 2012, 2013, 2014, 15. ऐसे. But assume कीजिए if it's the data goes for 10 or 15 years. So this is very hectic task. ये काफी hectic task है जहां पर आपके इस तरह से डेटा दिखेगा. And this is very difficult. इस तरह से analyze करना बहुत दिक्कत होएगा. Now what I can do? Whenever I am going to select the years also, तो ये years का right side में आप देख रहे हो years का एक column भी आ गया, एक value. So now I'll drag this year from rows to columns. Columns में मैंने years को रख दिया. Now this data is quickly analyzed. अब इसको मैं analyze कर सकता हूँ कि for different months, what are the performance or what is the count for different years. Different years में month by month क्या है, ये देख सकते हैं. So this is how we can create multiple reports at any point of time. मुझे ओरिजिनल डेटा में जाना है तो राइट क्लिक अनग्रुप. सो आई कैन मेक अनग्रुप और अनग्रुप में फिर ओरिजिनल डेटा में चले जाएंगे. यहां तक क्लियर है. अब नाउ वी कैन गो विद दिस वन आल्सो. राइट क्लिक, सॉरी, ग्रुप. वी कैन गो विद दिस क्वार्टर्स आल्सो. मंथ्स को हटा देता हूं, ओनली क्वार्टर. नाउ दिस इज शोइंग क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4. राइट. अब बताओ वीकली के लिए क्या करना है. मैं क्या सिलेक्ट करूंगा वहां पर वीकली के. व्हाट वी आर गोइंग टू सिलेक्ट वीक. क्या करेंगे वहां पर सिलेक्ट वीकली के लिए, बताइए. व्हाट वी आर गोइंग टू सिलेक्ट वहां पर. जैसे मंथ, डेज, ईयर है वैसे क्या है वहां पर वीक है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू सिलेक्ट वीक. वीक. वीक होगा नहीं वहां पर. Now what we can do, we can go with this days, and days में we can mark it as 7. Click OK. Done. आ गया ना weekly 7 days के gap में. So using pivot table, there are n number of things we can do. Right click, group, ungroup. Now let us make it as month. Month करता है फिलहाल. If I'm going to summarize this based upon percentage, to show value as percentage of grand total. Now I wanted to show the percentage and count both. Count भी दिखाना है और percentage भी दिखाना है. So what I can do, I can drag this date of joining one more time into the values. Values में एक बार और दिखा देंगे. So this is showing this. At any point of time you can rename this. आप इसको rename कर सकते हैं अपने हिसाब से. You can rename these columns. Clear है that when we drag this multiple times, एक ही values को multiple times drag कर सकते हैं, तो we generally get the multiple calculations and you can customize those calculations. अपने according कर सकते हैं. ठीक है. चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर हमने कर लिया. Let us see. So right click करते हैं अभी, या इसको हटा देता हूं मैं. अब मैं रखता हूं. Now I wanted to show in this running total. Running total मतलब जनवरी में इतने आए थे, फरवरी तक इतने हो गए, this plus this, मार्च तक इतने हो गए. तो I just wanted to show this as running total. So how we can do this? Right click, summarize value by, show value as running total. Running total or percentage. Let us go with this running total. Click OK. Now this is showing. देखिए लास्ट में 785 आ गया. तो ये बढ़ता 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 this is coming as running total. Add on, it's showing add on and it's showing till this December. December में it's showing the total. So and we can bring the count also, the direct count. देख लो, this is showing 71. 130 is the sum of this 71, 59. 197 is the sum of all these three. So this is showing like this, running total. Now even I can go with this percentage. Right click, show value as percentage running total. Click OK. Now this will show in percentage. 9, 16. In this one we have completed this 100%.
till October we have already achieved this 82%. So this is how we can show multiple analysis, multiple summary report using the simple options. चलिए, now one question. If I'm going to just drag this date of joining here, now if I'm going to let's say distribute it this in percentage, तो so value as percentage of grand total. Now अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि let us say like this, that मार्च अप्रैल के कंपैरेटिवली कितना ज्यादा है, हाउ मच इज मार्च प्लस और माइनस एज कंपेयर टू दिस अप्रैल, बताइए मार्च कितना ज्यादा है अप्रैल से, अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज? सर 0.5%, सॉरी 1.5%. 1.5. ग्रेट. नाउ लेट अस सी द एग्जैक्ट डिफरेंस. सो मैं रख लेता हूं अप्रैल में कर्सर, राइट क्लिक, सो वैल्यू एज परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम. So base item is April. April is the base. Click on OK. So based upon this April, each and every month is showing their performance. So April से comparatively March is 21.82% is greater as compared to April. February is 7% greater. Right. इस तरह से आप एक मंथ को बेस मान के दिस इज शोइंग द इंक्रीज और डिक्रीज. तो यहाँ पर कोई डिक्रीज नहीं है, इंक्रीज है. लेट अस कंट्रोल जेड. अब मैं करता हूं मार्च को बेस मानता हूं, राइट क्लिक, परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम मार्च. नाउ दिस इज शोइंग एज कंपेयर्ड टू मार्च, अप्रैल इज 17.91% इज लोअर, मे इज 2.99% इज हायर एज कंपेयर्ड टू मार्च. So these are the analysis that we can do. इस तरह से कर सकते हैं. Now if I wanted to analyze based upon the प्रीवियस मंथ, और इसको हम एक और चीज कर सकते हैं. लेट अस परसेंटेज में ना दिखा के वी कैन आल्सो शो द सेम फिगर इन अ काउंट. सो दिस इज शोइंग परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम एंड दिस इज शोइंग डिफरेंस फ्रॉम लेट अस सी. मैं कर देता हूं यहां पर मार्च. नाउ दिस इज, नाउ लेट अस ब्रिंग वन मोर टाइम. अब देखिए 67, तो हाउ मच लोअर, दिस इज -8. फरवरी -8 कम है एज कंपेयर टू 67. This is 71, तो 4 ज्यादा है, मतलब 5.97% is greater. So these are the different types of analysis, different types of summary, different types of report, different types of calculations that we can use using this options. Clear हो रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि how can we use this one? Yes sir. Yes sir. ठीक है, चलिए. Now अब आते हैं simple options में. Now this is showing. अब ध्यान दीजिएगा मार्क्स. अब अभी तक हमने मार्क्स का कुछ नहीं किया था. लेट अस सी मार्क्स डिपार्टमेंट. लेट अस शो विद दिस मार्क्स. सो दिस इज शोइंग द सम ऑफ मार्क्स. आई जस्ट वांटेड टू शो द एवरेज. सो राइट क्लिक, यहां पर जाएंगे, सो वैल्यू एज एवरेज लाइक दिस. वी कैन एनी टाइम वी कैन कस्टमाइज दिस फॉर्मेट. राइट क्लिक, समराइज वैल्यू बाय मैक्स. तो हर एक आपके डिपार्टमेंट का मैक्सिमम फिगर क्या है. राइट क्लिक, समराइज वैल्यू बाय मिन लाइक दिस, मिनिमम फिगर. राइट क्लिक, समराइज वैल्यू बाय, लेट्स ब्रिंग इट सम. ठीक है ना, एक ही हो गया. जैसे हमने अभी ग्रुपिंग किया था डेट्स पे, सो वी कैन आल्सो ग्रुप बेस्ड अपॉन नंबर्स. लेट अस शो. These are numbers. Let us group it based upon 10 का गैप चाहता है या 5 का. राइट क्लिक, ग्रुप. now this is showing by 10. I'll just show by 5. क्लिक ओके. देखा आपने 50 से 54, 55 से 59, 60 से 64 ऐसे करके आ रहा है. So this is how we can use it. Now we can just use this based upon marks. ऐसे कर सकते हैं कि 50 से 54 के बीच में 72 लोग हैं,
55 से 59 के बीच में 92। आप देखा आपने एक स्लैब्स भी क्रिएट कर सकते हैं स्कोर्स के, एंड यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द लेवल्स। ग्रुप, लेट अस डू दिस बाय 10। सो 50 से 59, 60 से 69, 70 से 80 से 89, 90 से 100। चलिए, so these are the different calculations that we have done. यहाँ पर इस डेटा में हमने ये सारा चीज कर लिया। So let us move forward, आगे बढ़ते हैं। So let us go with this employee involvement data. Now this data is basically each and every employee is involved in multiple projects or multiple department, you can say. Let's say as an employee, I worked for reporting department 20%. I worked for analytics department 50%. Now these are the different departments. Now let us take an example of any employee. किसी एक employee को लेता हूँ, let's say these are the different projects that is basically in work with. Now these are the different percentage. अगर आप इसको total देखेंगे, so this is showing 100%. So a person is involved in multiple projects or multiple departments based upon their percentage. अब करना क्या है? What I have to do? I have to basically show a report that employee wise total percentage involvement. हर एक employee का total percentage involvement क्या है? Irrespective of this department. Department का नाम नहीं लेना है, project का नाम नहीं लेना, only employee wise percentage involvement. So what we can do? We'll just create a pivot table. We'll use employee code first, क्योंकि code आपका repeated code is unique. नाम आपके अलग अलग हो सकते हैं. Rows. Now what I'll do? I'll put this employee name also into this rows. Now this is coming in different type of, I just wanted into the same rows. So what we have to do, we have to change the look and feel. So look and feel can be changed from design tab, and under design tab, this is showing report layout. So there are majorly 3 types of layout: compact form, which is this one, outline form, and the tabular form. So I have to go with this tabular form. तो जैसे मैं tabular form में जाऊंगा, so let us see, ये हो गया tabular form में. So 002, 003, and this is showing subtotal. This is known as subtotal. So I don't want this subtotal, so I'll remove this subtotal from this. So do not show subtotal. So this is showing employee code, this is showing name, and this is in tabular format. So from where I have just changed this into tabular format, analyze में जाएंगे, sorry, design में जाएंगे. Under report layout, this is tabular. Earlier it was compact, like this. Now we have changed it to this tabular format. Now the third one, percentage involvement, I have to bring into the values. So this is showing percentage involvement. Now this is showing in numbers. I have to change it to percentage. Example, this is showing 0.8. 0.8 का मतलब क्या होता है? 80%. So if I am going to change the format of a cell, so हम लोग क्या use करते हैं? We generally use this format cells. Format cell will only work on the current selected format. But in pivot table, the rows or columns keeps on increasing or decreasing. उस केस में क्या करना है? We have to use number format, and this number format is only available in pivot table data. Number format का मतलब क्या हो गया? कि this is going to format the entire data, entire column. So I'll go with this number format. Now here we have a percentage. 2 decimal नहीं चाहिए, 1 0 चाहिए. Click OK. Now this is showing in percentage, like this. If you want, you can remove this plus minus sign. आप देख लो, यहाँ पर plus minus का sign है. आप चाहो तो इसको हटा सकते हो. This one. How we can remove? Analyze, and this is showing plus minus button. I can click on this one, so it will remove this plus minus button. Now I'm getting like this. What we can do? We can go to design. So there are row headers. This one, this is showing bold. इसको कर सकते हैं. Column headers. So we can use the design like this. Now we can just click on any design and we can change as per our requirement. जो भी requirement है उसके basis पे कर सकते हैं.
So let us select a simple data like this one. We can go with banded rows. Banded rows किसी किसी में होते हैं. In few of data, this banded rows will come. Alternate rows आपके banded होंगे like this. Right. So this one, let us remove this one, banded rows. So this is the data जो मुझे अभी आया. This is clear. The different things, that different options that you have used in this one. Clear है? Now अब आते हैं इधर. टेस्ट मैक्स मिन स्कोर, ये बहुत इजी है. What I wanted to do, I just wanted to create group wise maximum and minimum score. कि ग्रुप वाइज एक एक ग्रुप में, ग्रुप ए में मैक्सिमम स्कोर कितने हैं, मिनिमम स्कोर कितने हैं, मतलब आई जस्ट वांटेड टू गेट द स्कोर, हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर. सो कैसे करेंगे? इंसर्ट पिवट टेबल, क्लिक ओके. आई विल गो विद दिस ग्रुप हियर, दिस स्कोर्स हियर. अब जैसे स्कोर को ड्रैग करूंगा, दिस इज शोइंग 900. स्कोर्स को क्यों ड्रैग किया? क्योंकि कैलकुलेशन करना है. एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन मस्ट बी ड्रैग्ड इनटू दिस वैल्यू. दिस इज शोइंग सम करना नहीं है मुझे, उन्हें हाईएस्ट और लोएस्ट चाहिए. तो व्हाट आई कैन डू, आई जस्ट गो विद दिस मिनिमम. सो दिस इज शोइंग मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम कर लेता हूं मैं पहले. मिनिमम, दिस इज शोइंग मिनिमम स्कोर. आई जस्ट वांटेड द मैक्सिमम स्कोर आल्सो. तो मैं स्कोर को और एक बार ड्रैग करूंगा. आई जस्ट ड्रैग द स्कोर इनटू दिस वन एंड आई कैन चेंज दिस टू, यहां पर जाके summarize value by max. This one, this is showing group A में 29 is the highest, 94 is 29 is the lowest, 94 is the highest. Group E में, and in group E 27 is the lowest and 93 is the highest. What is this showing? ये क्या दिखा रहा है? 26, 94. What is this? देखिए ये भी आपका कैलकुलेशन ही दिखाएगा. मैंने क्या है? मैक्सिमम और मिनिमम. So this is showing the minimum, overall minimum. अब देखो इन सब में सबसे जो छोटा है वो 26 है, यहाँ पर 26 आ गया. इन सब में सबसे जो बड़ा है वो 94 है, तो 94 आ गया. ओवरऑल मिनिमम एंड ओवरऑल मैक्सिमम दिखाएगा. ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब मैं और आगे नहीं बढ़ूंगा आज, क्योंकि आगे आप थोड़ा सा ऊपर से जाना स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, क्योंकि कुछ और कस्टम कैलकुलेशंस दिखाना है, विच इज इन द नेक्स्ट क्लास. और आपके अप्रोक्सीमेटली एक क्लास और शायद लग सकता है नेक्स्ट के बाद एक, नहीं तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाए. राइट.